What is it that disturbs my mind? What is it that disturbs my mind? Expectations, or thoughts, yeah, but what is it that disturbs those thoughts? Hurt. Outside situations, fear, desire, insecurity, emotion of? Emotions of? Thoughts of? थॉट से इमोशन क्रिएट होती है या इमोशन से थॉट क्रिएट होती है? थॉट से इमोशन क्रिएट होती है. एक्चुअली अंदर का जो सिस्टम है ना, वो बहुत दिनों से चेक नहीं किया, तो एक्चुअली तो समझ ही नहीं आता, वहाँ पे कुछ 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 चलता रहता है. हाँ, तो हमें पता नहीं है. इट्स लाइक अ फैक्ट्री जो बहुत टाइम से हमने देखी नहीं है. कौन के अंदर जाता है, क्या बाहर निकलता है, रॉ मटेरियल क्या है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, क्या उसकी स्टेजेस है, कुछ 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 हो रहा है अंदर. तो थॉट से फीलिंग या फीलिंग से थॉट भी नहीं पता चलता है. विच मीन्स विच इज़ द फर्स्ट स्टेज एंड विच इज़ द सेकेंड स्टेज ऑल्सो वी डोंट नो. वी नो व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड. Ask us right now what's happening in the other country, we know. Ask us right now what's happening on the other planet also, we know. But ask us what's happening here and we like, आप बताओ ना क्या चल रहा है मेरे मन में. So that we want other people to know. मेरा मूड खराब होता है तो I want somebody else कि आप मेरा मूड ठीक करो ना, मेरा मन होता है उससे. So हमें बाहर की नॉलेज है, राइट? क्यों नॉलेज है? क्योंकि हम सारा दिन उसके लिए मेहनत करते हैं. वी स्टडी, वी acquire, वी रीड, वी hear, we know everything what's happening about the world. But about the inner world, so there are two worlds. One is the outer world and one is my inner world. Outer world, miracles. Inner world, slightly neglected. और किसी भी चीज़ की तरफ अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक टेबल ही है, उसको 5 दिन सफ़ा न करो तो क्या हो जाएगा? अब ये वाइट रंग का टेबल क्लॉथ है, इसको अगर 1 हफ्ता कोई सफाई ना करे तो क्या हो जाएगा? इसके ऊपर एक लेयर ऑफ धूल आ जाएगी. और 7 दिन सफाई ना करो तो ये टेबल क्लॉथ का रंग बदल जाएगा. और उसके बाद हम पूछेंगे, what was the color of the sheet which was there on this table? Because we've lost the original color. Why did we lose the original color? Only because we did not clean it for the last 15 days. Only because we did not take care of it for the last 15 days. Now we've forgotten what is the original color of the tablecloth. What's the original color? What's the original color? अभी नवरात्रि पूरे हुए ना, तो हम देवियों की पूजा करते हैं. We are worshipping divinity. We are worshipping that divinity which is our original color. But because we are not experiencing that divinity within us, we feel it is divinity in them and we are worshipping that divinity. क्या वो डिविनिटी सिर्फ 9 देवियों में थी या वो डिविनिटी हम हर एक में है? क्या लगता है? Everybody has that divinity. देवियों के पीछे एक वाइट कलर का सर्कल दिखाते हैं. What does that white circle stand for? The aura. Do we also have a circle? Yes. What's the color? What's the color? Close your eyes. Close your eyes and see your circle. पहले देखें तो सही उसको 1 मिनट. Your circle color
is based on everything that's happening in the inner world. Your every thought, feeling, intention, karma, everything who I am, everything I think and feel about myself, about other people, मेरी हर सोच, now draw the circle. Choose the color. And now decide one thing which I will change today, which will take this color one shade lighter. Purpose of my life, to make my circle white. White. So what's the one thing I change today to make my circle one shade lighter? Okay. हर एक को दिखा अपना कलर. हर रोज देखना है इसको. जैसे शीशे में खड़े होकर अपना चेहरा देखते हैं कि how am I looking today? More important is to check. More important is to check. What are we focusing on? Not just how I'm looking today, but what am I radiating today to the world? And what I'm radiating today to the world is based on who I am inside. जब हम किसी से मिलते हैं, हम क्या बोलते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, that is secondary. The first thing that people get from us is our circle. Have you ever experienced कि कोई आपसे बहुत मीठी बात कर रहा है, बहुत प्यार से बात कर रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा comfortable नहीं लग रहा है? Ever experienced that? How many have experienced that? Yes. Which means शब्द बहुत अच्छे हैं, behavior accurate है, but what is not comfortable? The energy. The energy. Because the energy is what connects to my energy first. So when two people meet, the first thing which communicates with each other is my energy field with your energy field, which means my circle connects to your circle. The second will be my words and your words. And the third will be my behavior and your behavior. लेकिन first level of communication कहाँ से हुआ? My energy field with your energy field. अब सारा दिन में हम क्या ऐसा करें जिससे हमारा सर्कल वाइट रहे? वाइट सर्कल अच्छा लगेगा ना? यस, हाँ, वाइट सर्कल अच्छा लगेगा ना? और जितना हमारा सर्कल वाइट होगा, हम जिससे भी मिलेंगे क्या हो जाएगा? जस्ट विजुअलाइज, ये आपका सर्कल वाइट, and then you leave home in the morning and you go to your workplace and everyone you meet and you are walking with a white circle, what will happen to everyone you interact with? What will happen? अच्छा, opposite लेते हैं, okay? Black circle. जो कॉमन है वो ज़रा इजी होगा करना. फिर इसको देखेंगे.
Somebody is entering into the office with a black circle. Do we know what a black circle feels like? Yes? We know what a black circle feels like? Okay. Now visualize somebody is walked into the office with a black circle. What starts happening to the energy of the workplace? Experienced? Yes. What effect does it have on the other people who are working there? Which means, if I walk in with a black circle, I am able to trigger the black in other people. Matlab, if I walk in with a black circle and I meet him, I will trigger hurt in him. I will meet him, I will trigger fear in him. I will meet him, trigger irritation in him. Meet him, trigger anger in him. Meet you, trigger stress in you. I have just created a turbulence wherever I go. Possible? Can one person, only one person, enter with a black circle and bring a shift in the consciousness of the place? Yes? How many feel yes? Sure? Sure? And anybody can do this? कोई भी कर सकता है? सिर्फ उस कोई के पास क्या होना चाहिए? पावरफुल ब्लैक सर्कल. उतना ही चाहिए. तो अगर हमारे पास पावरफुल ब्लैक सर्कल है, हम जहाँ जाएंगे हमारी एनर्जी का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा. दूसरों के अंदर जो नेगेटिविटी है वो ट्रिगर होगी और ऐसे 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 ऐसे, और फिर हम कहेंगे ये आए और पूरा वातावरण ही बदल गया. यस यस. इफ ब्लैक सर्कल कैन क्रिएट सो मच मैजिक, white circle can also do the same thing. Yes or no? Yes. Now enter the same office, same people, enter with a white circle. What will happen? The black triggered the black in everybody. The white will trigger? The white will trigger the white in everybody, because every soul has both the colors. Which means every soul has all the beautiful sanskars and also few of the negative sanskars. The sanskar and the energy with which I walk in, I can trigger that in other people. So how much power only one person's energy field will have? Now I have to make a choice. That am I ready to make my circle white? And most important, keep it white throughout the day. Right? White clothes. सुबह सुबह तो सफ़ेद हम पहन लेते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये होता है जब रात तक हम वापस आए तब भी वो सफ़ेद रहना चाहिए. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सुबह सफ़ेद पहना, सारा दिन में सब कुछ करना है, हर जगह जाना है, सबसे मिलना है, काम करना है, सब कुछ करना है, लेकिन रात को जब वापस आए तो सफ़ेद सफ़ेद ही रहना चाहिए. तो क्या करना होगा? हाँ? Give me only one word to take care of only my white dress the whole day. What do I have to do? Just visualize. Early morning you wear white clothes. You have to travel, meet people, work, eat, sit everywhere, do everything. But come back in the night wearing the same white clothes. तो पूरा दिन में one word क्या करना होगा? Beautiful word. Careful. Simple word. Spirituality is also that. Just be careful the whole day. ध्यान रखो. एंड उसी के लिए फिर मेडिटेशन को क्या कहा? ध्यान. सिंपल. मतलब ध्यान रखो सारा दिन. हमने कहा ध्यान करो. ध्यान करो नहीं, ध्यान रखो.
ध्यान करो तो आधा घंटा करेंगे, आधा घंटा ध्यान करने से नहीं होगा, सारा दिन ध्यान रखो। क्या ध्यान रखो? कि वाइट वाइट रहे। अब अगेन आई गो बैक टू माई वाइट ड्रेस। ये वाइट सारा दिन में अगर ध्यान नहीं रखा तो इसका क्या हो जाएगा? मैं जहाँ जहाँ बैठूं उसका उसका दाग मेरे ऊपर लग जाएगा। तो अगर ध्यान रखा तो ये वाइट शाम को वाइट आएगा, और अगर ध्यान नहीं रखा तो ये जहाँ जहाँ टच हुआ उसका कलर लेकर शाम को घर आएगा। फिर ये अगले दिन फिर निकलेगा, फिर औरों का कलर लेकर आएगा। ऐसे करते करते थोड़े दिन के बाद ये वाइट तो वाइट दिखेगा ही नहीं, दिखेगा नहीं। अब सुबह हम निकले वाइट सर्कल के साथ। अब हम क्या ऐसा करते हैं जिससे ये वाइट वाइट नहीं रहता है? क्या करते हैं ऐसा? क्योंकि वो हमें नहीं करना है, ताकि फिर वाइट क्या रहेगा? वाइट रहेगा शाम तक। जस्ट विजुअलाइज एंड टेल मी व्हाट विल टेक अ वाइट सर्कल टू अ लिटिल डार्कर कलर। Anger 1, irritation 2, jealousy 3, greed 4, criticize 5, ego 6, hatred तो डार्क ब्लैक से भी ब्लैक है। वाइट में अगर हेट्रेड कर दिया तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो हेट्रेड। व्हाट एल्स? So now we know what are the emotions which is black color and what are the feelings which is white color. Now we know both. Now, when I know everything, when I know everything, when I know what is soothing for me, when I know what has the right effect on other people, when I know what is good for my physical health, white color circle will have a healthy body. Yes, black circle will radiate black energy to the body also. So I know everything. Then second question I have to ask myself, then why do I do such things which take my color too? Do I change the color of my circle, or do other people change the color of my circle? Do I change the color of my circle, or do other people and situations change the color of my circle? Because I like white. Very good. I allow others to change the circle of my color. I change the color of my circle, or do situations and people change the color of my circle? Again, go back to the last 7 days and bring any scene before you where your color changed. And then see the situation, see the people involved in this scene, and right now ask yourself, who was responsible for changing the color of my energy field that time? Okay, you know your color is changing just because of a mobile phone. Irritation, 1. Anger, 2. And she just was not able to silence it. So fear, 3. Who changed the color of my circle? The phone? Who changed the color of my circle? Just pause, silence. This is the time to set equations of life right. The phone was ringing. I was getting irritated.
And when I created that irritation, because of someone else forgetting to put their phone on silence, color of my circle changed because of somebody else's phone ringing.